So good evening all of you. The new chapter that is called dual nature of light and matter wave. So what is the meaning of dual nature? Dual means two. Light ର ଦୁଇଟା nature ଅଛି. Light has two natures. One is known as particle nature and another is known as wave nature. Light has two nature. One ray particle nature, two ray. Light has two nature, one ray particle nature, two ray wave nature. तो फर्स्ट अब हेडिंग करिवा पार्टिकल नेचर. तो पार्टिकल नेचर कथा हम कहले लाइट कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स and each particle is known as photon. Light consists of some particle and each particle light consists of some particle and each particle is known as photon, and energy of each photon is equal to h nu, whereas s टा कौन कहती ना h is known as Planck's constant और nu टा हला frequency. So this is the most important thing. What is the meaning of particle nature? ना particle nature माने हला सेया जे लाइट किसी छोट छोट पार्टिकल द्वारा गठित होइछि बा लाइट भितर किसी किसी पार्टिकल अछि जो पार्टिकल के कहंती तबे सब सुनिथिबो क्वांटा बा फोटोन आ से फोटोन रो एनर्जी टा होछि h न्यू व्हेरेज s टा को कहंती प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू टा कहंती फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट असला वेव नेचर. जो वेव नेचर कथा हम पछ को जीवा मैटर वेव को जीवा डे ब्रोगली हाइपोथेसिस पछे जीवा हमें ता पूर्वरु ए पार्टिकल नेचर विषय हमें आउ टिके डिस्कस करबा जे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ए माने कोन जे मेटल कहीं कहते हैं जे मेटल मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट. यह देहरे बहुत नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे सो दैट इज कॉल्ड मेटल्स. आम सब्सटेंस टाक तीन प्रकार कैटेगरी कर दी परिबा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सब्सटेंस is known as metals, substance is known as non-metals, and substance is known as that is called insulators. Metals means conductor, non-metals means insulators, and that another is known as semiconductors. आमे से पार्ट को जीवानी आमे जीवा emission of electron from the metal surface रो से how can you emit आमे गोटे metal surface रो केमिति इलेक्ट्रॉन को emit करिवा बहुत सारा मेथड्स अछि. देयर आर 4 मेथड्स, 4 प्रकार मेथड तुमको कहूँ जे हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस.
extract an electron from the metal surface. Number 1, thermonic emission. Number 2, field emission. Number 3, photoelectric emission. Thermonic emission, field emission, photoelectric emission. और number 4 रहउची secondary emission. तो फर्स्ट को पुणी हेडिंग करी मु थर्मोनिक एमिशन एटा भांगी दवा थर्मोनिक एमिशन को भांगी दवा थर्मोनिक एमिशन भांगी देले गोटे आसबो थर्मल प्लस आयोनिक एमिशन थर्मल माने हला हीट ड्यू टू हीट आयन सब एमिशन हम थर्मोनिक एमिशन मुझे तुमको गोटे एग्जांपल दूची जे गोटे मेटल सरफेस रु इलेक्ट्रॉन गुड़ाक आम केमती बाहर करिया सब तुम समस्त जानिच गोटे एक्सपेरिमेंट अच्छे ताको कहती डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से तुम कौन होता ना गोटे साइड रे वैक्यूम ट्यूब्स गोटे थिला से वैक्यूम ट्यूब्स गोटे साइड रे थिला कैथोड आ गोटे साइड रे थिला एनोड तो सी कौन होता ना कैथोड आ एनोड भितर किसी गैप थिला आउ से गैप रे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर रही थिला एवं से दीटा एंड को ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्शन कराई थिला आउ ए ट्यूबटा को कहउतला क्रूक्स ट्यूब एटा थिला कैथोड एटा थिला एनोड एठू इलेक्ट्रॉन गुडा को सब बाहरी जाउतला एटा थिला 10,000 वोल्ट ऊपर तार पोटेंशियल डिफरेंस थिला एवं एई जो इलेक्ट्रॉन गुडा सब जाउथिला एमाने कौन करथिले ना एइटू बाहरी की एइटू पहुंचुथिले केमती आस्तुले ता जत्ते बेले तांका भितरे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउ तांका भितरे ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस रहउथिला तो ऑटोमेटिकली कौन हबो ना एई प्लेटटा आगे हिटेड हेउथला तो हिटेड हला पर कौन हला से इलेक्ट्रॉन सब लॉस कला इलेक्ट्रॉन लॉस कले कौन हबो ना से इलेक्ट्रॉन राक जेहेतु कैथोडटा होची ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एठी आसिला तो इलेक्ट्रॉन राक ड्रिफ्टेड हला कोठी ना पॉजिटिव एंड एनोड आड़ को गला तो कैथोड रो एनोड आड़ को तो इलेक्ट्रॉन जीवो से इलेक्ट्रॉन पुनी कौन हला सेटा को स्ट्रेट लाइन ले जाउछ बोली हम केमती जानिबा ना तार पुनी से माने कौन कले ना गोटे एठी गोटे सामने रखले गोटे ओपाक सब्जेक्ट ए ओपाक सब्जेक्ट रखले कौन गोटे अस्वच्छ पदार्थ रखले ओपाक रखले तो ओपाक रखले कौन हम ना से जो इलेक्ट्रॉन गुड़ाक गला तो से जो इलेक्ट्रॉन गला इन टर्म्स ऑफ गोटे लाइट आकार गला से गोटे रे आकार गला तो से इलेक्ट्रॉन रे जो गला तो ये ओपाक सब्जेक्ट तो पड़ो देखले तार पछपटे गोटे छाई आस गोटे सैडो आस तो यू से कन्फर्म हेले सब स्ट्रेट लाइन गति कर फ्रंट रखले कौन कले ना गोटे गोटे व्हील रखिले गोटे व्हील रखिले देखा कौन है ना ये इलेक्ट्रॉन जो से व्हील सांगे बाजिला से व्हीलटा मुव करिया स्टार्ट करदेला तो से कन्फर्म हेले जे से रे गुड़ाक जो कनसिस्ट कर किसी पार्टिकल्स अच्छी आउ से पार्टिकल गुड़ाक किसी मास अच्छी दीज आर नोन एज मासिव पार्टिकल्स तो ये जो एमिशन है ये इलेक्ट्रॉन गुड़ाक सब आसला कहते थर्मायन्स कौन कहती ना ये जो यहाँ सब आसा थर्मायन्स कहते थर्मायन्स तो ये थर्मायन्स कौन ना ड्यू टू थर्माल ये जो ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस फल ये जो हीट होगा तो ये हीट है फल इलेक्ट्रॉन लॉस कर कहते थर्मायन्स आ थर्मायन्सटा हूँ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्माल इफेक्ट थर्मोनिक एमिशन आम कौन कह
the emission of electrons due to thermal effect is known as thermonic emission. तो सही पे ताना दिया emission of electron due to thermal effect, that is called thermonic emission. Second हम लिखितली field emission. मैं चारिटा emission लिखितली thermonic emission, field emission, photoelectric emission, secondary emission. तो second हम जिबा field emission कहले हम कौन बुझिबा. Field emission. So what is the meaning of field emission? Now the emission of electron due to help of electric or मैग्नेटिक फील्ड या माने कौन ना गोटा मेटल कहीं क्या कहती ना मेटल ताकू ही कहती जे जो कि ह्यूज अमाउंट रो फ्री इलेक्ट्रॉन थाए तो से ह्यूज अमाउंट रो फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल बाहर करी केमती बाय द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड एमिशन ड्यू टू बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो गोटे मेटल सरफेस पाखरे जदि आम गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज करवा तो से से कौन हम ना ऑटोमेटिकली से सब इलेक्ट्रॉन सब पदा को बाहर पलि आसो सिमिलरली गोटे मेटल सरफेस पाखे जब आम गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे इंपैक्ट पकेबा तो डेफिनेटली से इलेक्ट्रॉन सब पलि आसो तो ताको गोटे बाटे आम कहीपर जे ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन मु तुमको गोटे छोटी एग्जांपल दूसरी जे केमिति तुम देखि तुम जदि किसी तुम पाखे किसी जदि फॉर एग्जांपल तुम पाखे जदि स्मॉल आयरन रे लुहार किसी तुम पाखे मनकर मटेरियल्स रही तो मो पाखे गोटे मैग्नेट अच्छे स्ट्रांग मैग्नेट अच्छे तो ऑटोमेटिकली से तुम पाखे छोट छोट जो लुहा थी लुहा पार्टिकल थी आयरन पार्टिकल थी तो मुझे कौन करी ना ये जो मैग्नेट को हलचल करी तुम पाखे जो आयरन गुड़ाक अच्छे डिस्टर्ब करी अट्राक्ट भी करी से प्रकार एमिशन से जो मैग्नेट जो तुम देख तुम जानी ना मुझे तुम पाखे जानी ना तुम पाखे आयरन पार्टिकल्स अच्छी बोली कि मैग्नेट ये स्ट्रांग अच्छे ऑटोमेटिकली तुम सब पलि आसो तुम यहाँ गोटे अच्छी गाल्वानाइजिंग मेथड अच्छी जे एक्सट्राक्शन ऑफ आयरन ओर केमती आयरन बाहर करा जाए तो से आयरन को सफा करने यही प्रकार मेथड गोटे यूज करा जाए मैग्नेट को यूज करदे से सब नहीं पलि आसो आ बाकी से तार अलग पार्टिकल गुड़ाक सब पड़ रहा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस गुड़ाक पड़ रहा तेणु जो आयरन जो एक्सट्राक्शन करा जाए ସେଇଟା भी गोटे मेथड अच्छे तुम तो नेक्स्ट आम जा कौन ना तुम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन photoelectric emission the emission of electron due to photo means light the emission of electron due to photo or light is known as photoelectric the emission of electron due to photo but due to light is known as photoelectric emission तो गोटे मेटल सरफेस उपरे एटा गोटे मेटल अच्छी यहाँ उपरे मु लाइट पकेबी शॉर्टर वेवलेंथ पकेबी तो शॉर्टर वेवलेंथ पकड़े कौन हम ना यह देहरु इलेक्ट्रॉन गुड़ाक सब एमिट हम विथ सम काइनेटिक एनर्जी जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ सम शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट
दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ए जो यूजिंग लाइट आलोक को यूज करवा फोटो को यूज कर जते मु इलेक्ट्रॉन एमिशन कली से पई ता ना दिया गला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द नेक्स्ट आमे जिबा थर्ड थला गोटे थला फोर्थ पार्ट को आमे गोटे गला थर्मोनिक एमिशन गला गोटे फील्ड एमिशन गला गोटे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन गला एंड द लास्ट वन इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन सेकेंडरी एमिशन कौन ना सेकेंडरी एमिशन हला फॉर एग्जांपल सोडियम सोडियम रो एठी दीटा इलेक्ट्रॉन अछि एटा के सेल एठी 8टा अछि एटा 2 एटा 8 आ एठी रहला गोटे इलेक्ट्रॉन एटा को कहंती लगभग एटा हला फ्री इलेक्ट्रॉन सोडियम रो जो ऑर्बिट सब अछि तो फर्स्ट के ऑर्बिट रो रहला दीटा इलेक्ट्रॉन एल ऑर्बिट रो रहला 8टा इलेक्ट्रॉन आ एम ऑर्बिट रो रहला गोटे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट बा व्हिच सिचुएटेड ऑन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट दैट इज नोन एज सेकेंडरी दैट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन बट दैट्स इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट फ्री तो ताको ही कहंती वैलेंस इलेक्ट्रॉन ता कोन कहंती वैलेंस इलेक्ट्रॉन सी कोन होबो ना ये इलेक्ट्रॉन चाहिबो सब बेले फ्री होबा पई तो ए जेहेतु एटा फ्री इलेक्ट्रॉन अछि से फ्री होबा पई चाहिबो केमति होबो ना जतले बाहर गोटे मु इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करबी यार आउटरमोस्ट सरफेस को तो इलेक्ट्रॉन जतले आसीला ये इलेक्ट्रॉन जतले यार आउटरमोस्ट ऑर्बिट रे पहुंचीबो ये इलेक्ट्रॉन ताठू सब एनर्जी नै नबो ड्यू टू दी बता कोन तुमर आयनाइजेशन एनर्जी बा आयनाइजेशन पोटेंशियल बता को हमर फिजिक्स वर्ड मध्ये कहंती वर्क फंक्शन तो ये इलेक्ट्रॉन कोन कला ना से जो फॉरेन इलेक्ट्रॉन जोटा बॉम्बार्डमेंट करिथिली मु ताठू से कोन कला ना से एनर्जी सब नै नेला एनर्जी नहीं सरला परे सी पदा को पळे आसला आउ जे थिला से सेठी बसे रहिला सेकेंडरी एमिशन जोटा कि जस्ट लाइक तमे जो खो खेल जो खो खो जो खेला जाए खोखरे कोन करा जाए ना जते सब एमती लाइन में सब ठिया थांती आमे जहा को टच करवा सी उठी के पळे जीवो से जगह रे मु बस जीवी ताकू कहंती फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यस ताकू कहंती सेकेंडरी एमिशन ताकू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तक ए जो इलेक्ट्रॉन आसिला एठी ये हला प्राइमरी ये बाहरी गला सेकेंडरी सही पई ता ना देला सेकेंडरी एमिशन खोखो खेल रे से हुए तब देखो खोखो खेल रे कोन हुए ना जणे एपटे बसते जणे सेपटे बसते एमती अल्टरनेट वी के बसतांती जणे कोन करे ताको एमती राउंड मारिवो राउंड मारि मारि ताको आसी टच कर दबो जहा को टच कर दो से उठी पळेबो तो से जगह रे बसिबो के जे छुई तो से आसी बसिबो ना ये एक्जेक्टली से हुए ताको कहंती सेकेंडरी एमिशन त मु चारि प्रकार एमिशन कथा तम मान को कहली गोटे हला थर्मोनिक एमिशन गोटे कहली फील्ड एमिशन गोटे कहली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो आउ गोटे कहली सेकेंडरी एमिशन एबे हमें जिबा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हेडिंग करवा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यार चारिटा लॉ अच्छी प्रथम लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is an instantaneous process. Instantaneous. Photoelectric effect is an instantaneous process. Instantaneous process माने कौन ना गोटे गोटे पर्टिकुलर गोटे इनस्टांट अच्छी जो पर्टिकुलर इनस्टांट माने गोटे माने तुम ताको तुम कहबा कि गोटे इलेक्ट्रॉन माने ता देहरु जे बाहर इलेक्ट्रॉन जोटा बाहर तुम मेटल सरफेस रु सी कौन ताको के बसे की बाहर करिवो ना कौन ऑटोमेटिकली इंस्टांटेनियस सेटा कहीं ताको बसे की बाहर कर से ऑटोमेटिकली बाहर आउ से जो इलेक्ट्रॉन तुम जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन सब बाहरिला से इलेक्ट्रॉन बाहरला माने ताको द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट तो से यही जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बा फोटोइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन जो बाहरला ताको गोटे बाटे कहती फोटोइलेक्ट्रिक करंट तो से फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट नंबर 2 रे होची फोटोइलेक्ट्रिक करंट
photoelectric current is directly proportional to intensity of photoelectric current is directly proportional to intensity of light. प्रथम पॉइंट लिखली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जेन इंस्टांटेनियस प्रोसेस ताकू सेठी बसिकी सेठी कहीं भी तुमर से इलेक्ट्रिक करंट माने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कहीं बसिकी करानी से अपना छाई होता है। सेकंड रे मु कहली कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मु बढ़िया एग्जांपल दूँ तुमको तुम सकाळिया सूर्य किरणटा को गोटे मेटल सरफेस पकेबो गोटे मेटल सरफेस रखिछ गोटे सकाळिया सूर्य किरणटा पकेबो तो सकाळिया सूर्य किरण पकिले जेतिक इलेक्ट्रॉन बाहरिबो दिन 12टा बेले जो तुम इलेक्ट्रिक करंट पकेबो बा दिन 12टा बेले जदि से लाइट पड़िबो तो डेफिनेटली दिन 12टा बेले बेसी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बाहरिबो। तो जते जते इंटेंसिटी बढ़ी बढ़ी चलिबो तो सेते सेते इलेक्ट्रॉन संख्या मध्ये बढ़ी बढ़ी चलिबो। आ गोटे मिनिमम गोटे पोटेंशियल अछि से मिनिमम से पोटेंशियल न होले इलेक्ट्रॉन बाहरिबा स्टार्ट करिबो ताकू कहंती स्टॉपिंग पोटेंशियल। ताकू कोन कहंती ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो नंबर 3 को हम जिबा the stopping potential and hence the maximum velocity of the electrons depends on frequency of incident depends upon frequency of incident light। The stopping potential and hence the maximum velocity of the electron depends upon the frequency of incident light। गोटे डेफिनेट गोटे फ्रिक्वेन्सी दरकार। मोटे छोटे एग्जांपल तुम दूछ माने गोटे लोकटा 2 दिन धरी खाई ना उपवास अच्छे तुम्हें दीटा 3टा रुटी खायापी देदेल जमी रुटी खाईद तो ग्लास पानी पीदे गोटे ग्लास पानी पी सारिक तू दौड़ा स्टार्ट कर से दौड़ी पार कह मत दौड़ापी गोटे मिनिमम गोटे एनर्जी दरकार दौड़ापी गोटे मिनिमम गोटे पोटेंशियल दरकार दौड़ापी गोटे मिनिमम गोटे फ्रिक्वेन्सी दरकार गोटे इंटेंसिटी दरकार ना से इलेक्ट्रॉन बाहरी पारनी जमती लोक को दौड़ापी गोटे मिनिमम एनर्जी दरकार सेमती इलेक्ट्रॉन को जावाई गोटे मिनिमम अमाउंट गोटे एनर्जी दरकार। तो सहीटा हूँ जो मिनिमम जो पोटेंशियल दरकार ता तल को इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टॉप हो जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऊपर को इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छी स्टॉपिंग पोटेंशियल तल को इलेक्ट्रॉन आ बाहर ना। तो सही थर्ड पॉइंट लिखा द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड हेंस द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एंड नंबर 4 the electron the emission of electrons stop in a certain frequency। The emission of electrons stop in a certain frequency that is known as threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नहले इलेक्ट्रॉन एमिशन टा स्टॉप हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऊपर को से इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तल को इलेक्ट्रॉन एमिशन हम ना थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऊपर को इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो चारिटा जो लिखिली फर्स्ट पॉइंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टांटेनियस प्रोसेस नंबर 1 एटा अपना छाई हुए एटा को बसई के करांतनी। सेकंड लिखिली फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोटे मिनिमम तुम कह गोटे मेटल सरफेस रे टॉर्च लाइट पकईकि इलेक्ट्रॉन बाहर कर पारि
टॉर्च लाइट रे पारिबिनी गोटे डेफिनेट इंटेंसिटी लाइट दरकार थर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड हेंस द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट गोटे निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दरकार निर्दिष्ट गोटे पोटेंशियल दरकार देले जाई से इलेक्ट्रॉन बाहर कर परिबो आउ से मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी दरकार ताकि कहते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टार्ट बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैपेंस तो से मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आम एटा को बेस करी किसी किसी ग्राफ आम टाणी पार मुझे तुमको गोटे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस गोटे फ्रीक्वेंसी गोटे ग्राफ टाणुची एमती एटा हला पोटेंशियल एटा हला तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एटा हला स्टॉपिंग पोटेंशियल एटा हला स्टॉपिंग पोटेंशियल एटा को कहते तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एटा कहीं स्ट्रेट लाइन आसो मुझे तुमको आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो एपटे देखीदेवी जे कहीं लाइन टा स्ट्रेट लाइन है सिमिलरली जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट सब जो ग्राफ अच्छी तुम समस्त बही भी देखो से ग्राफ गुड़ाक एमती अच्छी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्राफ सब अच्छी पोटेंशियल एटा करंट ग्राफ सो फ्रीक्वेंसी अच्छी बड़ा एफ फ्रीक्वेंसी अच्छी आ गोटे ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन करि परिबा इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ करंट ग्राफ टाको आम एमती स्ट्रेट लाइन टाणी पार तो डिफरेंट ग्राफ सब दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट या कौन कहती ना एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक बट यही प्रकार सब तार लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक नहीं आम सब विभिन्न प्रकार सब ग्राफ टाणी पार स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेंट पोटेंशियल करेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट सब ग्राफ एबे आम जीवा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे जीवा व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता कौन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट photoelectric effect is the phenomenon of emission of electrons from the surface of certain substances, from the surface of certain substances mainly metals when mainly
मेटाल तुम कह कि प्लास्टिक रु बाहर करी इट इज नॉट पॉसिबल केवल मेटाल दूर बाहर करें मुझे तुमको ऑलरेडी कही सारी मेटाल दूर कहीं बाहर करी ना बिकज मेटाल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी प्लास्टिक रे फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी ना लिक्विड सरफेस रे फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी ना आउ गैसेस सब्सटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी तो यहाँ कौन हम ना फोटोलिटी इफेक्ट इज द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस मेनली मेटल व्हेन लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ is incident upon it तो एटा हूँ गोटे मेटाल सरफेस सो यहाँ हूँ गोटे मेटाल सरफेस एथि जो लाइट पड़ा से लाइट तुमको ऑलरेडी तुमको कही सारी फास्ट इज दैट लाइट हैव टू नेचर्स वन इज पार्टिकल नेचर अनदर इज वेव नेचर अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर लाइट कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल इज नोन एज फोटोन and each photon carries some energy and that can be expressed hf whereas already मैं तुमको कही सारी जो फोटोन एनर्जी ढाला hf आउ से h टाको कहती प्लांक्स कांस्टेंट f टा होची फ्रीक्वेंसी तो गोटे डेफिनेट फ्रीक्वेंसी रो लाइट गले जाई गोटे मेटाल देहरु गोटे इलेक्ट्रॉन टा बाहरिबो तो से इलेक्ट्रॉन किछि अमाउंट रो एनर्जी रिसीव करनी किछि अमाउंट रो एनर्जी से ताको रखी दबो बाकी से तार गोटे काइनेटिक एनर्जी आकार पड़ी जिवो जेतिको अमाउंट रो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रखी दिए ताकू ही कहती आयनाइजेशन एनर्जी बा ताकू ही कहती तुम वर्क फंक्शन जेतिको एनर्जी से रखी दिए केते ना HF0 अमाउंट एनर्जी से रखीदेला यहीटा को तुम फिजिक्स से कहती वर्क फंक्शन बा ताकू बोधे आम कहीपर आयनाइजेशन एनर्जी तो HF आसीथिला HF0 नहीं नेला बाकी से हाफ एम स्क्वायर स्पीड रे काइनेटिक जगह पळेला तो मु कौन कौन पढ़ी ताले छुआ माने तो मु आज फास्ट जो स्टार्टिंग कली डुअल नेचर ऑफ लाइट रू जे व्हाट इज द जो चारि प्रकार जो दुईटा नेचर कहली गोटे पार्टिकल नेचर कहली गोटे वेव नेचर कहली चारि प्रकार एमिशन कहली थर्मोनिक एमिशन सेकेंडरी एमिशन फील्ड एमिशन फर्टिलिटी एमिशन और ये फर्टिलिटी इफेक्ट और लॉज ऑफ फर्टिलिटी इफेक्ट एगुड़ा को बस पढ़ेगा तबे कौन कर आज जाकि तुम बही आण बही आणिक सब पढ़ डाउट किसी सार मान मो नंबर नब पचार एवं यह रिलेटेड कौन कौन सब क्वेश्चन सब पड़ी इजी चैप्टर गोटे क्वेश्चन कितु परीक्षा आसो यार जो क्वेश्चन आसो यहीटा पढ़ो कि लॉज ऑफ फर्टिलिटी पढ़ो जो क्वेश्चन आसो बस भल के प्रैक्टिस कर यही समय तुम देख बहुत तुम वीडियो जाऊँ सब ताक भल के कर हाँ आउ काउंसिल कौन ए रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ देखिए और मत पचार फोन नंबर नहीं मानक पचार ए कौन कौन क्वेश्चन सार हो पार मुझे कहीदेवी वीडियो कौन कौन ए क्वेश्चन हो पार तो नेक्स्ट क्लास आसले आम पढ़ा जे आइनस्टाइन थ्योरी जोटा कि यार लंग क्वेश्चन अच्छी से यहाँ पर ही से लगे पड़ो तो यार एक्सपेरिमेंटल फैक्टा को मुझे तुम चार्टा ग्राफ टाणी तुम से ग्राफ को यूज करके बही तुम सब निजे नोट बढ़िया बढ़िया नोट बनइब आ नोट बनईकी तुम देख केमती केमती बढ़िया बढ़िया सब नोट समस्त बनईच तो घरे रही समस्ते आराम से ठीक ठाक करके हाथ धोथुव मास्क पिंधुव मार्केट को जीवनी नेक्स्ट क्लास आसले पुणी आइनस्टाइन थ्योरी फर्टिलिटी पढ़ा थैंक यू।